आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, एरिथ्रोपायोसिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज द व्हाट इज़ द एरिथ्रोपायोसिस? Erythropoiesis is the process of the origin, development and maturation of erythrocytes. Erythrocyte means RBCs. The second term is hemopiosis or hematopiosis. It is the process of origin, development and maturation of all the blood cells. Now we discuss the site कि where it is produced. So in the fetal life, erythropoiesis occurs in 3 stages. The first one is mesoblastic stage. During the first 2 months of the intrauterine life, the RBCs are produced from the mesenchymal of yolk sac. In the next stage, hepatic stage. Hepatic stage, from the 3rd month of the intrauterine life, liver is the main organ that produce RBCs. Spleen and lymphoid organs are also involved in erythropoiesis. The third stage is myeloid stage. During the last 3 months of the intrauterine life, the RBCs are produced from the red bone marrow and the liver. Now, in the newborn babies, children and adults, up to the age of 20 years, RBCs produced from the red bone marrow to all the bone marrow, all the bones, like log bones or flat bones. And after the age of 20 years, the RBCs are produced from the membranous bone, like sternum, ribs, skull bone, from the end of the long bones. The bone marrow of the site of production of all the blood cells. Comparatively, 75% of the bone marrow is involved in the production of leukocytes or WBCs. Only 25% involved in the production of erythrocytes, RBCs. The process of erythropoiesis. Before starting the process, we have to understand the some terms like stem cells. So what is a stem cells? Stem cells are the primary cells capable of self-renewal and differentiated into the specialized cell. तो स्टेम सेल्स में प्राइमरी सेल्स होती हैं जो कैपेबल होती हैं सेल्फ रिन्यूएबल के लिए और डिफरेंशिएट होकर स्पेशलाइज फॉर्म बन जाती हैं. हीमोपायोटिक स्टेम सेल्स. These cells are the primitive cells in the bone marrow which rise to the blood cells. And the next is the hemopiotic stem cells in the bone marrow are called the uncommitted pluripotent hemopiotic stem cells, and in short form it's said to be PHSC. So PHSC is the cell that can give rise to all type of blood cells. The next is process of erythropoiesis, and the next term is committed PHSC. These cells are restricted to give rise to one group of blood cells, and the committed PHSC are 2 types. Committed है तो वो restrict कर देती है. तो committed PHSC के 2 types हैं. The first one is lymphoid stem cells and the colony forming blastocytes. Lymphoid stem cells किसको राइज करती है? लिम्फोसाइट्स को और नेचुरल किलर सेल्स को. लिम्फोसाइट्स की फर्दर डिवीज़न है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स. एंड कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स गिव rise to the myeloid cells, and myeloid cells are the blood cells other than lymphoids. And myeloid cells, when grow in the culture, these cells from the colonies, hence the name new colony forming blastocytes. Different unit of colony forming cells are. कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स की डिफरेंट यूनिट्स हैं. CFUE. C स्टैंड फॉर कॉलोनी फॉर्मिंग, U फॉर यूनिट एंड E फॉर एरिथ्रोसाइट्स. एंड सेल ऑफ दिस यूनिट डेवलप इनटू द एरिथ्रोसाइट्स. कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स, एंड दीज सेल्स आर राइज टू गिव टू द granulocytes, basophils, eosinophils and the monocytes. And colony forming unit megakaryocytes. These cells produce the platelets are developed from these slides. CFU का जहाँ से origin होगा वहाँ से एरिथ्रोसाइट्स बनेंगी, ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट्स होंगे वहाँ से WBCs फॉर्म होंगी, और जहाँ मेगाकार्योटिक साइट्स होंगी वहाँ से प्लेटलेट्स डेवलप होंगे.
The cell of the CUVE pass through the differentiate stage and finally become the matured RBCs. During these stage 4 important changes are noticed. RBCs के प्रोडक्शन के स्टेज में स्टार्ट से ओरिजिन से लेके मैच्योर्ड RBCs तक के डिफरेंट स्टेजेस हैं. इसमें हमको 4 इम्पॉर्टेंट चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. द फर्स्ट वन इज़ रिडक्शन इन साइज ऑफ द सेल्स फ्रॉम द डायमीटर ऑफ 25 to 7.2 माइक्रोन. इतने साइज तक वो सेल रिड्यूस हो जाती है. डिसअपीरेंस ऑफ न्यूक्लियस का डिसअपीरेंस हो जाता है. अब अपीयरेंस हो जाएगा हीमोग्लोबिन का. एंड साइटोप्लाज्म की स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज देखने के लिए मिलेगा. सो द वेरियस स्टेजेस बिटवीन द colony forming unit erythrocyte to matured RBCs. Here we discuss 6 stages. The first one is pro-erythroblast, early erythroblast, intermediate normoblast, late normoblast, reticulocytes, matured erythrocytes. Here we discuss one by one. Firstly, we see the flow chart. Colony forming blastocytes and lymphoid stem cells that divide into the 3 categories. तो CFU एरिथ्रोसाइट्स, CFU मोनोसाइट्स और ग्रेन्यूल मोनोसाइट्स. तो एरिथ्रोसाइट्स जाकर मैच्योर RBCs बनाएगा, मोनोसाइट्स फाइनल जाके प्लेटलेट्स फॉर्म करेगा और मोनोब्लास्टिक साइट WBCs का फॉर्मेशन करेगा. स्टेजेस मैंने बताई अभी. प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, नेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स एंड फाइनल मैच्योर्ड RBCs. एंड CFU AM से मेगा कैरोटोसाइट्स एंड देन फाइनली मेड द प्लेटलेट्स. एंड CFU GM डिवाइड इनटू द 2 parts, myloblast and monoblast. The pro-erythroblast or megaloblast, it is the first cell derived from the CFU-E. It is very large in size, in diameter about 220 microns. The nucleus is large and occupies the cell almost completely. The nucleus has 2 or more nuclei and the reticular network. Pro-erythroblast does not contain the hemoglobin. हीमोग्लोबिन का कोई कंटेन नहीं होता और बेसोफिलिक नेचर का होता है साइटोप्लाज्म. Pro-erythroblast multiplies several times and finally form the cell of next stage. In the early normoblast, these cells is smaller than the pro-erythroblast with the diameter about 15 micron. In the nucleus, the nuclei disappear. न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, क्रोमैटिन नेटवर्क occurs and the condensed network become dense and the cytoplasm is basophilic in nature. Hence the cell is called as basophilic erythroblast. And the cell develop into the next stage called intermediate normoblast. In the intermediate normoblast, cell is smaller than the early normoblast within the diameter 10 to 12 microns. Reduce हो गया फिर से. The nucleus is still present but the chromatin network shows further condensation. अब chromatin network का कंडेंसेशन दिखाई देता है एंड द हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स अपीयरिंग. यहाँ से हीमोग्लोबिन का अपीयरेंस दिखता है. एंड द साइटोप्लाज्म इज ऑलरेडी बेसोफिलिक एंड द सेल डेवलप्ड इनटू द नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड लेट नॉर्मोब्लास्ट. लेट नॉर्मोब्लास्ट, in this stage the diameter of cell decrease further about 8 to 19 micron and nucleus become very small with very much condensation, chromatin network, and it is known as link spot nucleus. Quantity of hemoglobin will be increased and the cytoplasm become almost acidophilic, so the cell is called as a orthochromic erythroblast. In the final stage of late normoblast, just before it passes to next stage, the nucleus disintegrate and disappear. The process by which the nucleus disappears is called the pyconesis. Reticulocytes. In this stage, the otherwise known as the immature RBCs, it's slightly larger than matured RBCs. And the cytoplasm contains the reticular network. And due to the presence of reticular network, it is called the reticulocytes. And next stage is the matured erythrocytes.
Mature erythrocytes, the reticular network disappear and the cell become the matured RBCs and attain the bioconcave shape. तो shape of the RBCs bioconcave. The cell decrease in size to 7.2 microns in diameter. The matured RBCs in with the hemoglobin but without nucleus. The matured RBCs में क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ होती है बट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. It requires 7 days for the development and maturation of RBCs from the proerythroblast. इसके डेवलपमेंट में 7 days का टाइम लगता है. It requires 5 days up to the stage of reticulocyte. फिर रेटिकुलोसाइट्स के लिए 5 days चाहिए. रेटिकुलोसाइट टेक्स 2 more days to become the matured RBCs. रेटिकुलोसाइट्स के बाद वो मैच्योर्ड आरबीसी करने के लिए 2 days और ऐड करते हैं उसमें. Here we conclude the important event during the erythropoiesis. In the proerythroblast, the important event is synthesis of hemoglobin starts. यहाँ से हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है. In early normoblast stage, nuclei disappear. In the intermediate normoblast, hemoglobin start appearing, and the late normoblast, nucleus disappear. And reticulocyte, reticulum is formed. Cell enter capillary from site to site of production. And the matured RBCs, reticulum disappear and cell attains the bioconcavity. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe.